This conference will क्लस्टर now be डिप्लॉय करने के recorded. लिए सबसे पहले वी नीड अ वन कंट्रोलर। हमारे पास एक कंट्रोलर नोड होना चाहिए। तो क्लस्टर डिप्लॉय करने के लिए फर्स्ट है कि एक स्टोरेज अकाउंट आपके पास होना चाहिए। नाउ स्टोरेज अकाउंट बिकॉज द क्लस्टर इंफॉर्मेशन सेव इन दिस स्टोरेज। सेकंड, आपके पास आपका डोमेन नेम यानी कि रूट 53 की सर्विस भी होनी चाहिए। तो जिस नाम से आप रूट 53 सर्विस रखेंगे उसी नाम से क्या होगा, आपका क्लस्टर भी होगा। तो दिस इज द रूट 53 एंड रूट 53 जो हमारी सर्विस थी, हमने जो रूट 53 बनाया था वो था हमारा आई थिंक सो माई क्लस्टर .com के नाम से। एंड जो हमने i3 स्टोरेज बनाया था वो हमने बनाया था माई क्लस्टर इन्फो के नाम से। So these are the two things. So now check कर लेते हैं. So like I'm just click on S3 bucket and click on bucket. So guys, my cluster info, this is already is available. Now I'm just also check a route 53. So कल वाला route 53 भी हमारे पास available है. Now I'm just click on route 53. बंद करो क्या लाइट? So the mycluster.com. So mycluster.com से route 53 है. Then I'm just create a one IAM role. और मैंने एक IAM role भी create करा था। और इन दिस रोल के अंदर मैंने क्या दिया था, क्रिएट IAM रोल। और IAM रोल के अंदर मैंने जो परमिशन दी थी वो मैंने दी थी EC2 फुल एक्सेस की। नाउ द सेकंड S3 फुल एक्सेस, देन रूट 53 फुल एक्सेस की परमिशन हमने एलोकेट करी थी। VPC की ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, एडमिन, तो जो भी आपको राइट्स चाहिए वो हमने राइट्स एक रोल बनाया था। देन आई एम जस्ट क्रिएट अ वन कंट्रोलर नोड एंड नाउ आई एम अटैच अ role with this controller. When we attach a role with this controller node, the automatically this node user access S3 storage and root 53 both. This is my controller node. Then after controller node we deploy a cluster. कंट्रोलर नोड पे बैठने के बाद हमने क्लस्टर डिप्लॉय कराया था। नाउ द टुडे आई एम डिप्लॉय क्लस्टर, आई एम जस्ट डिप्लॉय ओनली वन मास्टर एंड वन सर्वर। गॉट इट? So I'm just deploy a one master node and one worker node. So this is my master node. And this is my worker node. The master and worker node, the when you create a cluster, the automatically one Kubernetes service is deployed between master and worker node. जब भी आप एक Kubernetes cluster बनाएंगे तो आपके इसके बीच में एक सर्विस बनती है जिसको हम बोलते हैं cluster IP. And this service provides a communications between master node as well as cluster node. And cluster node also. So now I'm deploy this scenario. So I'm just go to one controller node is already I'm deploy EC2 and now attach a role. So I'm just create a monitoring. Select this controller node, then go to actions, then go to security. Inside the security, modify IAM role or we have attach a one role. Is it clear, guys? इतना बना लोगे, कोई challenge नहीं होना चाहिए. Now I'm deploy a cluster. I'm just login with this machine. Copy public IP.
now I'm logging with this machine. Sudo su hyphen, and first of all I'm just update a file. So यहाँ पर सबसे पहले मेरे को अपनी फाइल अपडेट करनी है, जिसके अंदर मेरे को इंफॉर्मेशन देनी है कि मेरा कुबरनेट किस नाम से है, वो सारी चीजें ना किस नाम से है. द फाइल नेम इज लुक लाइक अ बेस आरसी. आई एम जस्ट कॉपी. तो अभी इस पे मैंने क्लस्टर डिप्लॉय करा हुआ था ऑलरेडी. सो आई एम जस्ट क्लिक mycluster.com, mycluster.info. So I'm just click on this file. I4 insert and right click, paste, and now I'm just add a entry. So I4 insert, and now I'm here the cluster name is mycluster.com and then cluster info. Yes or no guys? तो ये मेरा डिफरेंट दूसरे क्लस्टर का है, मैं ये दूसरे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. Escape colon wq. After that I'm just update. Already I'm installing this machine in Kubernetes. That means I'm already install K8s already installed in this machine, as well as the already install a kubectl. So ये दोनों चीजें पहले से ही क्या हैं, इस मशीन पे installed है. So now I'm just create a cluster. So K8s create cluster. Cluster name is my cluster. Number of nodes. So now guys I'm create a one node and one master. तो कल मैंने आपको बता दिया था when you create a multiple node so or multiple master, so you can just increase the size, copy and paste, and now enter. So I'm just execute this file, or after that we have typed this command K8s update cluster, or either a complete name. And now guys it's running on it, deploy my cluster. Clear everyone? Yes, sir. My cluster is ready within 10 minutes. Now I'm explaining you other things. Now today I'm explaining you two things: the pod and service. Now the pod Kubernetes use a pod. K8s using pod. The pod is a collection of containers. Inside container, inside pod creates any number of containers. So guys, this is my pod choice is where you create a single container, or either you create a multi-container. Within containers, within pod, the container is connected with each other. Within pod, containers is connected with each other. When
one container is goes down, the second container is also down. So guys, पॉड के अंदर आप वो कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाला. अगर आपका एक कंटेनर फेल्ड हो गया तो दूसरा कंटेनर भी आपका फेल्ड हो जाएगा. फेल क्या हो जाएगा? दैट विल नॉट गिव. सो बेसिकली इट्स यूज दिस मल्टी कंटेनर concept is a condition. The multi container concept if condition like you create a website. बट आपको बताया कि एनीवन कैन कम्स इन अ वेबसाइट. तो वेबसाइट पे आके अगर कोई ऑनलाइन आप कोई स्कूल की या कोई कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हो, वहां पे कोई फॉर्म है, तो आपने क्या बनाया? वेबसाइट से डिप्लॉय कर दी कंटेनर 1 पे, एंड नाउ यू कैन डिप्लॉय अ पॉड database to the another container. So now your SQL work on this machine and your web server run in this pod container. Now if this container goes down, so आपका क्या है? SQL भी accessible नहीं होगा. That means the dependencies. So अगर आपको डिपेंडेंसी सर्विसेज को रन करना चाहते हो तो आप सिंगल पॉड के अंदर मल्टीपल डिपेंडेंसी सर्विसेज को बना सकते हो. गॉट इट माय पॉइंट गाइस? कि लाइक कि आपको चाहिए कि इसके साथ ये चीज और रिक्वायर्ड है, तो आपने क्या करा? यू क्रिएट अ टू कंटेनर, द सर्विस वन रन इन कंटेनर 1 एंड सर्विस 2 रन इन कंटेनर 2. क्लियर गाइस? कहते हैं ना, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, लाइक किसी भी एप्लीकेशन का. तो बैक एंड मतलब लाइक का एसक्यूएल पे आप बैक एंड बनाते हो, फ्रंट एंड पे आपका वेब पेज होता है जहां पर. तो क्या है कि आपने एसक्यूएल अलग कंटेनर पे डिप्लॉय कर दिया एंड वेबसाइट अलग कंटेनर पे डिप्लॉय कर दी. यानी कि अगर आप कुछ चीज फेल होता है तो एक ही चीज फेल होगी. तो मुझे पता लग जाएगा कि अगर मेरा यहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड कुछ एरर आ रहा है तो वेबसाइट के कंटेनर पे ट्रबल शूट करूंगा, और अगर मेरा डेटाबेस से रिलेटेड कोई एरर आ रहा है तो मैं डेटाबेस के कंटेनर पे करूंगा. नाउ द ऑलवेज द आईपी एड्रेस प्रोवाइड बाय द पॉड. जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो पॉड के बेस पे होता है. सो द आईपी एड्रेस यूज्ड बाय द पॉड. तो अगर आप किसी भी नेटवर्क में कोई भी एक्सेस करेंगे तो जो आईपी हम पॉड पे डालेंगे, लाइक हम सेट आईपी इन अ पॉड, तो वही आईपी आपके कंटेनर्स का भी होगा, क्योंकि दिस इज अ ग्रुप. तो हमने ग्रुप नंबर डाल दिया है, तो ग्रुप के अंदर जो भी चीजें सपोज करो वो सब कॉल हो गए. यस और नो? लाइक क्लास, हमने बोला कि क्लास नंबर क्लास 1 को लाइक थर्ड फ्लोर पे जाना है. दैट मीन कि क्लास 1 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को थर्ड फ्लोर पे जाना है. यस और नो गाइस? सेकंड आता है द सर्विस, द K8 सर्विस. अब मैं K8 की सर्विस की बात करता हूं तो आई एम जस्ट एक्सप्लेन द टू बेसिक सर्विस और नॉट एन इज अ इंपॉर्टेंट सर्विस. द वन सर्विस इज क्लस्टर आईपी. The cluster IP, this service provide this service provide connections between nodes in a single cluster. यानी कि जो क्लस्टर आईपी है वो आपके क्लस्टर के कम्युनिकेशंस कराती है. कि लाइक अगर आपके क्लस्टर में आपने 10 वर्कर नोड्स लगाए हैं, 5 मास्टर्स लगाए हैं, तो उन सबको कम्युनिकेट जो सर्विस कराएगी, दिस इज सर्विस इज अ क्लस्टर आईपी. सो व्हेन यू क्रिएट अ क्लस्टर, अगर आप कभी भी कोई भी एक क्लस्टर क्रिएट करते हो, तो क्लस्टर के साथ ही आपकी क्या होती है? आपका लाइक इनसाइड द क्लस्टर यू क्रिएट अ मास्टर नोड एंड वर्कर नोड्स. तो इसके बीच में आपकी एक सर्विस बनती है, दिस सर्विस कॉल्ड अ क्लस्टर आईपी सर्विस. वो बाय डिफॉल्ट आपकी क्लस्टर आईपी सर्विस क्या होती है? डिप्लॉय कराती है, जिसका काम होता है कि वो आपके सारे के सारे नोड्स के बीच में कम्युनिकेट प्रोवाइड कराती है. गॉट इट द पॉइंट गाइस? सेकंड, node port. The node port service, when you access pod containers
application in WAN network used node port service. यानी कि अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉड बनाया, इस पे मैंने एक वेबसाइट बनाई है एक्स नाम की, अगर मुझे एक्स नाम की वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी लोकेशन पे क्या करना है, एक्सेस करना है, तो मेरे को कौन सी सर्विस यूज करनी पड़ेगी, नोड पोर्ट. सो नोड पोर्ट बेसिकली यूज फॉर द वैन एक्सेस. आप अपनी सर्विसेज को वैन में एक्सेस करना चाहते हैं, सो यू नीड अ नोड पोर्ट. क्लियर गाइस? एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. Now, how to create pod? So simple, sir, guys. When you create a pod, the pod use a same image is available in your Docker hub. तो जो इमेज आपके डॉकर हब पर है, क्योंकि पॉड के अंदर क्या बन रहे हैं, कंटेनर्स बन रहे हैं, और कंटेनर्स कौन सी इमेज यूज करते हैं, जो इमेज आपके डॉकर हब पे होगी. सो लाइक दिस इज योर पॉड, और इनसाइड द पॉड यू क्रिएट अ कंटेनर. तो इन कंटेनर्स पे भी आपकी वही इमेज, यानी कि कंटेनर का मतलब जहां पे भी कंटेनर आ गया, द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई इन अ डॉकर. वो इमेज कहां से पुल करेंगे, डॉकर हब से पुल इमेज करेंगे. So now I'm go to this and now I'm validate this cluster. So now you can see that my cluster is validate and they're like a two servers deploy, one is master, another is node. So condition is true, is ready to use. Now I'm just clear. Like if you can see the services, अगर आप अपनी services को देखना चाहते हैं कि कितनी services अभी बनी हुई हैं. So now I'm already explain you कि when you create a cluster, the automatically one service is deployed, the name is cluster IP. So the kubectl get service. So guys, you can see the one service available with the type is cluster IP, or either you use the command svc. So both output is same. So like if you can see the pod कि आपका कोई pod बना हुआ है, but before creating the pod I'm write a one command like kubectl get pod -o output void -w. So guys, मैंने ये कमांड चला के एक प्रोसेस रनिंग छोड़ दिया है. ये रनिंग क्या है, ये रनिंग मेरे को क्या है कि अब यहाँ पर मेरे को लॉग्स, यानी कि मेरे को स्टेटस दिखाता रहेगा कि मेरे पॉड के साथ क्या करंट सिचुएशन हो रही है. नाउ आई एम जस्ट ओपन द डुप्लीकेट कंसोल ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन. अब मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा और आप देखना यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे दिखाता रहेगा जो भी काम मैं करता रहूंगा. कैसे, लाइक आई एम क्रिएट अ पॉड sudo su hyphen. Now clear? There's a no any pod is available. Now you can check the pod kubectl get pod. Nothing. There's a no any pod is available. Either you type of pods or pods command, or either you type a po command. These are the three commands is provide the same output. Now I'm just create a pod, the same command कि अगर हम कंटेनर बनाते तो क्या लिखते थे, docker run. If you create a pod, you can type a kubelet kubectl run or give the pod name. Like I'm just create a nginx pod nginx -pod pod1 and then image. So hyphen image is equal to nginx. So if the mistake is run. Now you can see it's create a one pod, or you can see the output. First pending, then pending, and then container is creating, and then container is come to running state. Got it? So within a 10 second मेरा container क्या आ गया, running state. If I'm just create a one more container like kubectl run, or now I'm just create a web pod. Web -pod 2 at this time कि मैं इस बार ये तो क्या कि मैंने nginx दिया तो इसने क्या करा, डॉकर हब से इमेज उठा ली, बट मे बी कि मेरी कस्टम इमेज इज अवेलेबल इन माय डॉकर हब.
So now I'm just give them my account ID ICCP Infotech slash Omega Web, or either you create a Git. So now guys, you can see it show again creating, and then again it's come to running straight. Got it? Same as I'm just click key if I'm delete the pod. So like is a simply kubectl delete pod and give the pod name. The pod name is like nginx hyphen pod 1. Now enter. So guys, you can see it's terminated. Clear the concept, guys? Wait. ये स्टार्टिंग में पॉट बनाया था तो पेंडिंग था ना, पुल कर रहा था ना इमेज को. ये वाइट का मतलब है ये आपको स्टेटस दिखाएगा, आउटपुट देख रहा हूं मैं यहाँ पर. Now so guys, I'm just create again pod. So now guys, कि मैंने दो वेबसाइट बनाई हैं, बट अगर आप इन दोनों वेबसाइट्स को चेक करेंगे ना तो ये दोनों वेबसाइट अभी एक्सेस नहीं होंगे आपकी. क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक सर्विस ऐड नहीं करी है. क्योंकि मेरे को अगर वैन में एक्सेस करनी है वेबसाइट तो मेरे को क्या चाहिए? सर्विस रिक्वायर्ड है. ये तो वैन एक्सेस हो गया ना, ब्राउजर तो इज वैन एक्सेस. नाउ कि अगर मेरे को वैन एक्सेस करना है तो वैन एक्सेस करने से पहले क्या है कि सपोज करो दिस इज अ पॉड एंड दिस इज योर इंटरनेट. Now so you can assign like a pod port, you can assign a pod port is look like a 9000. This is your port of pod, and then WAN port is a 80. WAN port क्या होता है हमारा? 80 होता है. That means कि मेरा source port क्या हो गया? And destination port, target port is 80. यानी कि ये pod request कहां पर भेजेगा? 80 पे. बट Kubernetes क्या करता है? The Kubernetes provide one more security. वो यहां पर एक और पोर्ट अपने आप से जनरेट कर देगा. नाउ अब क्या होगा कि अब ना तो वैन का डायरेक्ट लिंक किसके साथ रहा? पॉड के साथ. ना पॉड का डायरेक्ट रहा. अब पॉड जो रिक्वेस्ट भेजेगा अपनी, द पॉड ट्रांसलेट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू दिस पोर्ट एंड देन दिस टू दिस. यानी कि अगर बाहर से भी कोई अटैक आता है तो वो कहां पे रुक जाएगा? यहीं पर ही रुक जाएगा, मेरी एप्लीकेशन तक वो पहुंचेगा ही नहीं. गॉट इट द पॉइंट? सो नाउ इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाउ टू एक्सपोज, यानी कि हाउ टू क्रिएट अ सर्विस. और सर्विस का मतलब है एक्सपोज का मतलब है मैं पोर्ट अलाउड करना चाहता हूं. सो आई एम जस्ट एक्सपोज द पोर्ट लाइक क्लियर, and if I'm just type the command the kubectl get pod, it show the both pods are running. Now I'm type a command like kubectl expose pod and give the pod name is nginx hyphen pod pod 1, then hyphen type. So service type is
node port space hyphen hyphen port. This port is equal to like 9000. This 9000 port is my pod. Then hyphen hyphen target hyphen port is equal to 80. Then hyphen hyphen name space service 1. Yeah, node port np service 1. I'm give the service name node port hyphen service 1. Give the any name. Now enter. So target targ. So now guys, I'm export this port same as I'm just export like here port is look like 8000, and now I'm just create a like a node port service 2, and now I'm just using a web hyphen port 2. Now guys कि अगर अब आप सर्विस कमांड से सर्विस देखते हैं, so the command is kubectl kubectl get svc. So now you can see the one service is automatically created and these two services deployed by me. The service type node port. Now you can see the point कि 9000 is forward to 31032. So now 31032 अब हम access 31032 colon 31032. Sorry. 31032 IP क्या था सिस्टम का colon 31032. So guys, it's denied. Why denied? कि when you create a cluster, आप कभी भी क्लस्टर करते हैं तो क्लस्टर अपना खुद का एक सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाता है, क्योंकि हमने जो कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ था वो सिक्योरिटी ग्रुप कंट्रोलर नोड के साथ अटैच करा था. बट व्हेन द जब हमारा क्लस्टर क्रिएट हुआ तो क्लस्टर ने अपना भी एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था जिसके अंदर उसने क्लस्टर के रूल्स अपने आप बनाए. बट ये तो हमारा पोर्ट है ना वैन एक्सेस, तो ये पोर्ट उसके अंदर अलाउड नहीं है. तो नाउ आई एम अलाउड दिस पोर्ट. सो ये पोर्ट, सो मेरे को अगर देखना है कि आई एम जस्ट गो टू, और मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज द पोर्ट जो भी बनते हैं वो कहां पे बनते हैं, नोड पे बनते हैं. सो आई एम जस्ट गो टू द नोड, एंड इस नोड पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर पोर्ट को अलाउ करूंगा. सो आप गो टू द सिक्योरिटी ग्रुप और आपको सिक्योरिटी के अंदर जाना है, सिक्योरिटी के अंदर जाकर उसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके पोर्ट्स को ऐड करा देना है. बट मैं क्या करता हूं, मैं सिक्योरिटी ग्रुप में जाके ऑल पोर्ट्स कर देता हूं. So now click, you can see that the both two security group is deployed. One is master, second is, so I'm just click on this and go to the inbound, edit inbound and select add rule, all traffic. Same as I'm just go to node, edit inbound rules, add, and all traffic IPv4 and save rule. Got it guys? And now if I'm refresh it, so just a minute guys, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या? एक मिनट, सिक्योरिटी ग्रुप कोई और कर दिया मैंने. हम जस्ट क्लिक, एक मिनट, सिक्योरिटी ग्रुप, नोड पोर्ट, एडिट. ओके, तो ऑल ट्रैफिक ऐड नहीं करा था क्या मैंने?
अच्छा मास्टर में दोबारा से नहीं, the specific pair is allowed for already exit. ऑलरेडी बोल रहा है भाई, वेट 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 वेट, मैंने शायद ऑल ट्रैफिक नहीं लिया था, कस्टम हो रखा है यहाँ पर, और इधर ऑल ट्रैफिक कस्टम हो रखा है यहाँ पे, ऑलरेडी ऐड तो है यार, ऐड है यहाँ पर भी, एंड बैक टू सिक्योरिटी ग्रुप, मास्टर में भी ट्राई करते हैं एक बार और, ऑल ऑल यहाँ भी हो रखा है, वेट वेट गाइस, गिव मी 1 minute गाइस. So now guys, I'm back to again my node, and I'm type my kubectl get service, and the port is 31032 or 31482. So I'm just try 31482. So colon 31482. So now no any service is active. So I'm back to I'm just close it. I'm just close this one. Now I'm just back to here. I'm just click on instances. Because मैं ना गलत आईपी ले रहा था, मैं कंट्रोलर नोड का आईपी पे काम कर रहा था, जबकि मेरा जो पॉड डिप्लॉय होता है वो कहाँ पे होता है, वर्कर नोड पे होता है. तो दिस इज आईपी colon and then port number is 31032. 31032. 31032. Okay, and now the second part, 31438. 31438. 31438. Got it guys? How to create pod?
तो जब तक आप सर्विस एड ऑन नहीं करेंगे, पोर्ट एक्सपोज नहीं कराएंगे, तो आपका पोर्ट एक्सेसिबल होगा नहीं। लेकिन जो पोर्ट आप एक्सपोज करा रहे हैं उससे नहीं, आपको सर्विस से जाके कस्टमाइज पोर्ट देखना पड़ेगा जो ऑटो जनरेट पोर्ट हुआ है। ये ऑटो जनरेट पोर्ट भी कहां से हुआ है? तो इसकी भी लिमिट जो है ना, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जब क्लस्टर बनाते हैं, तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी क्या है, वो एक लिमिट सेट करी हुई है उन्होंने। If I go to the master security group, तो and edit inbound rule, तो देखिए यहाँ पे 21 to 6 कस्टम यूडीपी और टीसीपी पोर्ट जो उन्होंने दे रखे हैं, वो यहाँ पे दे रखे हैं बिटवीन दिस टू दिस, कि हमें जो कस्टम पोर्ट्स हैं वो कहाँ से कहाँ मिले हैं, 2382 से लेकर 4000 के बीच में। लाइक अगर आप यहाँ पे कर दे तो लाइक कस्टम पोर्ट लाइक 5002-6000, नाउ सेव रूल। तो उस हिसाब से क्या है, उन्होंने वहां पर वो पोर्ट्स को अलाउ कराया हुआ है कि कौन सी सेटिंग कहाँ की है और कौन सी सेटिंग कहाँ की है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you can set the port number between 1 to 65,536, बट कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिनके पोर्ट नंबर्स क्या ऑलरेडी सेट हैं। तो गाइस ये ऑटोमेटिकली, बट वहां पर है, बट कुबरनेट फिर भी एक जो रेंज है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपने क्या लेगा, पोर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा। सो हमारे वो पर्टिकुलर पोर्ट्स उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अलाउड होने चाहिए। तो ना बैक टू, और नाउ कि मैं यहाँ पे जाता हूँ इन सिक्योरिटी ग्रुप एंड लाइक एडिट इनबाउंड रूल, और मैं दोबारा से यहाँ पर एडिट कर देता हूँ पोर्ट्स को कि कौन से वाले थे, ये थे। तो टीसीपी पोर्ट्स को लाइक का मैं कर देता हूँ 2800 से 4000 तक। पोर्ट रेंज नीड टू बी ए नंबर टू अ रेंज ऑफ कितना था, 28 27 था, कितना था, डबल आईफन 12 दे रहे। ओके 28 hyphen. So second thing कि guys, this is the accessing the how to create pods. Now you can see कि अगर मैं अब आपको कुछ basic information बता रहा हूँ, like POD pod, kubectl, describe, POD pod and pod name like web hyphen omega, sorry, web hyphen pod 2। तो गए देखिए, जो आप कह रहे थे ना, वो पेंडिंग क्या आ रहा था, वो पेंडिंग ये आ रहा था क्योंकि उसने पहले पुल करी थी इमेज, कहां से, यहां से। तो ये आपकी पॉड की इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी कि पॉड की मैं डिटेल इंफॉर्मेशन ले रहा हूं कि पॉड के क्या है। तो पॉड मेरा किस पर्टिकुलर नोड पे डिप्लॉय हुआ है, पॉड के अंदर जो कंटेनर्स बने हैं उस कंटेनर्स की आईडी क्या है, ठीक है ना। जो पॉड ने जो इमेज पुल करी है, तो इमेज कहां से पुल करी है, तो ये आपका पूरा यहाँ पे क्या है, पॉड की इंफॉर्मेशन आ रही है। गॉट इट एवरीवन? नाउ कि अगर आप Yes, पॉड sir. के कंटेनर के साथ पॉड से अगर लॉगिन होना चाहते हो, तो सिंपली लाइक आई एम जस्ट kubectl, आप डॉकर पे क्या करते थे, डॉकर एग्जीक्यूट कमांड, सेम kubectl exec execute hyphen it, give the pod name like I'm just give the pod name is like nginx hyphen pod pod 1 and bash, वहां बिन बैश यूज होता था, यहाँ पे बैश kubectl exec। Now I'm just login with pod and I'm just go to the cd slash usr slash share share slash nginx slash html. Now enter and type the command like apt hyphen get update hyphen y
So first time update the repository and install the Vim. And now edit the file vim index.html. Now I4 insert. So this is the Nginx. Welcome to India. ICCP info TCS tech. Now escape colon WS. And now guys, refresh it. Clear? Everyone? Now Yes, you sir. can delete Yes. calls. You can type a command like I'm just exit from this. kubectl get delete pods pods hyphen all. डिस्क्राइब करा था ना अभी मैंने. देखिए मैंने अब दोनों पॉड टर्मिनेट कर दिए एक साथ. हाँ क्या कह रहे हो? नहीं होगा. नाम से कैसे? रूट 53 है ना, डोमेन नेम है ना. रूट 53 के थ्रू आप रूट क्रिएट करोगे वहां पे, वो आपको AWS में जब पढ़ाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा. वहां वो रूट 53 का टॉपिक है. यहाँ वो सर्विस रिक्वायर्ड है. लाइक आप नेम से एक्सेस करना चाहते हो तो डोमेन नेम चाहिए ना. तो यहाँ तो मैंने पब्लिक प्राइवेट लिया है, वहां पे पब्लिक ही खरीदता हूँ मैं GoDaddy से. ठीक है ना, क्योंकि नेम से तो हम एक्सेस ही नहीं करते. क्लियर एवरीवन? तो आफ्टर दैट इज द इंपॉर्टेंट कमांड कोप्स डिलीट क्लस्टर. द कोप्स कमांड जो होती है गाइस, इट्स यूज फॉर क्लस्टर. सो क्लस्टर से रिलेटेड जो भी वर्क करना है वाया कोप्स ही आप करेंगे. सो इनफ फॉर टुडे गाइस, इनफ या कंटिन्यू? Enough. बताइए गाइस. थैंक यू एवरीवन. प्लीज रिप्लाई.